पिछले महीने मैंने तय किया कि अब से मैं रोज हर दिन सुबह खुली हवा में घूमने निकलूंगा। And I started this. 28 जुलाई 2022 I started going for a morning walk every day. But due to the bad weather, after 3 days, I fall sick. मैं बीमार पड़ गया. And I decided to share this incident of mine with you because I was not only going on a morning walk, I was doing something more than that. Hi, I'm pnkazbora and I have taken a little initiative to clean 10-meter circle around me. This is my first day. What I have done today. Okay, so this is my second day. Look what I have done.
इन 3 दिनों में मैंने ऑब्जर्व किया कि आपको कोई भी 10 मीटर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर कि पूरा क्लीन हो। हर 10 मीटर में आपको रैपर ज़रूर मिल जाएगा। कहीं रैपर बिखरे हुए हैं, कहीं कांच की बोतलें टूटी हुई हैं, बट हु केयर्स? एज एन इंडिविजुअल पर्सन, व्यक्ति के तौर पर आपकी पर्सनल फ्रीडम का मतलब है आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप अपनी नॉलेज से कुछ भी कर सकते हैं अपनी स्किल्स के साथ में। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं, आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो आपकी नॉलेज हो कितनी भी, आपका बैंक बैलेंस हो, आपकी कुछ मदद नहीं करने वाला है। सो फिजिकल फिटनेस इज योर प्रायोरिटी। आज मंडे है, लेट्स मेक दिस अ फ्रीडम वीक, अ इंडिपेंडेंट वीक। मेरी सभी युवा दोस्तों से अपील है कि दिस वीक लेट्स मेक आवर एनवायरनमेंट free from waste wrappers and waste bottles. Let's make our environment clean. So this week, keep a sanitizer and water bottle and mask with you to perform this kind of task to clean your environment. नमस्कार, अगर आपको मेरी ये बात वैल्यूएबल लगी हो तो इसे आगे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।